पोर्टफोलियो का मेन रोल है। ठीक है, विदाउट पोर्टफोलियो, विद पोर्टफोलियो आप अप्लाई करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार विद पोर्टफोलियो वाले में लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मैं पहली बार टीच कर रहा हूँ आपको, कभी मैंने, आपने कभी मुझे जाना नहीं, मैंने कभी आपको जाना नहीं। ठीक है, अब बताओ कि तुम मुझे चूज करोगे या फिर एक पर्सन जो आपको कंटिन्यू काफी दिनों से यूट्यूब के माध्यम से या फिर और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ा रहे थे, आप बहुत अच्छे से उनको जानते हो, आपने 2-4 क्लासेस उनकी ली हुई है। ठीक है, और आपको उसमें क्या बोलते हैं, लगा है कि हाँ ये बेटर है। ठीक, अब दोनों में से किसको चूज करोगे? भले ही मैं बहुत दिन से पढ़ा रहा था बट मेरा कोई अपीयरेंस नहीं था, बट नेक्स्ट पर्सन को आप अच्छे से जान रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो। ठीक है, और नेक्स्ट पर्सन कोई भी हो सकता है, तो ट्रस्ट उस पर ज्यादा बन रहा है ना। ठीक है, और यही पोर्टफोलियो का गाइस हाँ रोल है। सर, और एक सर इसमें बीजीवीएस भी चलेगा सर? क्या चीज? हाँ, बीजी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चलेगा सर जॉब के टाइम पे? हाँ, और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जो अच्छी कंपनियां होती है वो करेंगी। सर एक्चुअली है ना सर, मेरे पीएफ में है ना सर, दो आईटी कंपनीज का भी लिंक हो गया है सर। हाँ, तो गड़बड़ होता है, दिखाना पड़ेगा। हम्म, क्योंकि पीएफ एक बार अगर ऐड हो गया तो पीएफ कटता नहीं है, मतलब उसका एक्सपीरियंस साथ में ही चलता है। वो तो सर 1-2 महीने का ही है सर, उसके लिए थोड़ा दिक्कत होएगा करके सोच रहा हूँ। नहीं, 1-2 महीने का तो मेंशन करना जरूरी नहीं है। 6 महीने हाँ। के नीचे है तो मेंशन करने की नीड नहीं है। चलो गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट कर दे मॉक, नहीं तो समय कम मिल पाएगा। कौन रेडी है? फटाफट रिंकू आपसे स्टार्ट किया जाए। ओके सर। ओके जी। जी सर। ओके जी, रिंकू के बाद जो रेडी है ड्रॉप द मैसेज गाइस। मुझे अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग, सभी लोग अपने मॉक के लिए अटेंड हो रहे हो, सभी तो नहीं हो रहे बट काफी सिंसियर लोग अटेंड हो रहे हैं। तो आज मैं आपका जो मॉक लूंगा गाइस, वो सारा मॉक बेस्ड ऑन क्या बोलते हैं, आपके रिज्यूमे होगा। इसलिए अभी मेरे पास उदय का रिज्यूमे है, इसके बाद उदय का मॉक होगा, मसूद का है, अयान का है और रिंकू का है। तो हम लोग रिंकू के मॉक से स्टार्ट करते हैं। रिंकू, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस सेल्फ। Good morning, sir, गुड। and thank you for allowing me to introduce myself. My name is Rinku Panchal. I am from Hisar, Haryana. I did my diploma in civil engineering in 2021 from Government Polytechnic Mandi Adampur, Hisar. After that, I did job 2 years for local as a DCM textile as a data analyst to help my family become financially stable. After that, sir, I prepare for competitive exam, but I did not get better result. In beginning of my diploma, sir, I have deep interest in creating 3D model, so I joined BIM internship. Currently, I am pursuing it from a Unix Civil. Here, I can learn multiple software like AutoCAD, 2D, 3D, Revit architecture, Revit structure, MEP, Navisworks, Tekla, etc. In AutoCAD, You sir, just, oh, that's thank you. okay. And just mention, you just mentioned in a resume quantity take off. So you know that software quantity take off. Yes, sir. What is the use of that and how it was? Quantity take off, sir, to estimate the how much quantity are used in the construction project, like different type of quantities calculate, like how many type of doors and how much door are used in the construction project, and how many type of bricks and quantity of bricks and windows are calculated using the some softwares like AutoCAD, and also quantity take off using Revit, and this is are helpful to estimate the cost before starting the construction project, sir. Okay, you just mentioned here about the reinforcement detailings. You have experience in that. What are जी the sir. things you done in reinforcement detailings? Reinforcement detailing, sir, used to detail the reinforcement in beam and column and slabs. It is helpful to estimate the data of reinforcement before construct the slab and beam, and it is helpful to estimate the quantity and cost before the constructing the project, and it is also helpful to calculate the strength of beam and column. Yes, sir. Got it. You just mentioned here your project was in the final year, leadership in the final year sustainable garden project. What are the जी sir. things you done in that? In sustainable garden project, sir, we have created the some sustainability like recycling plastic used to create the some benches and boundaries of the garden, and
we are using the some recyclable product, recyclable products in this garden, and we have created the rainwater harvesting tanks in this garden project, and uh, we have planting the some trees which have always green and did not uh, drain the leaves, and that's all, sir. Okay. You just contributed for the mall and cinema project. What are your roles in that? uh, in this project, sir, we have created a cinema, a small cinema, and we have some also created many space for the another shops uh, Burger Kings, and also, and this cinema is created for the five floor, which have two floor have for specially for cinemas, and another floor for other activities like playing some games, and another shops, sir. Okay. You just mentioned here you have a skills of elevate the construction accuracies by delivering the flawless workshop drawing. What do you say by workshop drawing? Okay, sir. Workshop drawing. Workshop drawing, sir. I'm sorry, sir. Currently, I'm not recalling. Okay. I will definitely So, give you answer just after prepare. that. You just mentioned here layout in AutoCAD you've done. What do you mean by layout? What's layout? Layout means, sir, the project we have created in the AutoCAD, like 2D project, in which we have mentioning the wall thickness and plinth area and type of beams are used in, uh, and also describe the area of floor and how many floor are constructed in these buildings. This is called art layout. You just mentioned here LOD 300 and 350. What is the Yes, sir. meaning of that? LOD 300, sir, in which model are shown detail and accurate modeling, in which model show the precise quantity and shape, size, and orientation also. And in LOD 350, in which model have necessary information to describe the how the element are connected with another element and coordinate with stockholders in different, sir. Okay. Uh, in how many companies till now you applied it? In sir, two company I have still now applied, sir. One is the Century, where I know about in LinkedIn, sir. Okay. Sir. Just today you need to mention. Today your task is to apply in the 5 companies. Okay. Okay, sir. I just mentioned in the group 2 earlier you applied and 5 Yes, more. sir. 7 companies name just list the name. Okay, sir मैंने ये Okay, sir. कंपनी में अप्लाई किया है. Okay, this is the Excel only sheet provide task. करेंगे. Yes, Excel sheet प्रोवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आप टेक्स्ट लिख दीजिए. और 5 कंपनीज प्लस 2 कंपनी 7 कंपनीज में आज अप्लाई करना है. अप्लाई करने से फॉर्मेलिटी नहीं करनी है. फॉर्मेलिटी इन द सेंस Yes, कि sir. हमको प्रॉपर Yes, sir. रिज्यूमे एडिट करके पूरा दिन है आपके पास. ठीक है, Yes, sir. इसलिए ना केवल यही टास्क है. ठीक है, Okay, तो sir. यू नीड टू अप्लाई इन द 5 कंपनीज. उनके एम्प्लॉयज को भी कनेक्ट करना है लिंक्डइन पे, और Yes, उनको sir. जीमेल पे जाके एनी हाउ इन 5 कंपनीज जस्ट अप्लाइड. दिस इज द ओनली टास्क. आज का जो पूरा आपका इंटरव्यू हुआ ये रिज्यूम बेस्ड हुआ. ठीक है. Yes, sir. नेक्स्ट जो इंटरव्यू होगा आपका वो होगा पोर्टफोलियो बेस्ड. Okay, sir. ठीक है, तो यू नीड टू Yes, रिमेंबर, sir. यू नीड टू प्रिपेयर. अभी समझ आ गया होगा कि रिज्यूम में एक एक लाइन जो लिखा गया है ये नेक्स्ट टाइम Yes, फिर sir. से पूछा जाएगा, ऐसे ही पूछा जाएगा. ठीक है. Yes, sir. ओके. और यूनिंग में आज 10 PM पे रेबिट एमईपी का एक लेक्चर चलेगा. ठीक है, दिव्यानिक सर लेंगे, और तो उस लेक्चर को जरूर अटेंड करना है विद दिस. 10 ठीक है, p.m., sir. 10 PM पे. ठीक Okay, है, sir. ज्यादा देर का नहीं होता है, मुश्किल से 30-40 मिनट का. ठीक है, sir. ठीक है, चलेगा. ये ठीक है. सबके लिए, इनके लिए नहीं केवल. हाँ जी. ओके, थैंक यू. नाउ नेक्स्ट इज गाइस, कौन रेडी है? बिना रिज्यूमे के आपका मॉक नहीं होगा, सो प्लीज पहले रिज्यूमे भेज कर रखे. मसूद जी ने भेजा हुआ. मसूद मसूद अपना माइक ऑन कर लीजिए. और सभी लोग जिन्होंने अभी रिज्यूमे नहीं भेजा फटाफट भेज दीजिए, क्योंकि रिज्यूमे पे ही मौका है आज का. Sir, I have sent. ओके, वेरी गुड थैंक मसूद जी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस्टर मसूद, एंड रिमेंबर ऑलवेज शेयर योर रिज्यूमे in PDF, not in docs. Okay, introduce yourself. Hi, sir. Good
गुड morning जी. Good morning जी. Thanking you for introducing about myself. My name is Sheikh Masood. I am basically from Nellore, Andhra Pradesh. I completed my graduation in 2019 from RSR Engineering College in the stream of civil engineering. After completion of my graduation, I started my career as a highway engineer in BACPL infrastructure in Nasik. It was a superfast express communication highway laid in between Nagpur and Mumbai, named as Samruddhi Mahamarg. After that, I have been working in single projects. Currently, I'm pursuing BIM 360 BIM professional course from Gurukul Academy. In that course, I includes AutoCAD 2D, 3D, Revit architecture, Revit MEP, Revit structures, and BIM 360 courses. That's it. In That's it. Thank you. AutoCAD, I have made many practice projects like Sir, network one आ रही है ना. residential in this course I have made many practice projects like one residential building, one apartment building, one hospital building, and ओके. मसूद, जस्ट ऑफ योर कैमरा. ठीक है, आई थिंक देयर इज नेटवर्क इश्यूज, तो आपकी आवाज क्लियर आ नहीं पा रही है, बीच बीच में कट जा रही है. आप बोल अच्छा रहे हो, बट ड्यू टू द नेटवर्क इश्यूज शायद वो वर्क नहीं कर रहा है. ऑफ योर कैमरा. आवाज जा रही है मेरी? डिस्कनेक्ट हो गया इनका. वो नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा था. ठीक है, इससे पहले तब तक हम लोग मयंक का कर लेते हैं, होप सो उनका सॉल्व हो जाए. मयंक सिंह जी. Yes, sir. ओके. मिस्टर मयंक, मयंक, what's the status of your portfolio? it was actually some network issues and that's why it disconnect. ओके मसूद, आफ्टर मयंक विल डू. ठीक है, आफ्टर मयंक करें. तब तक आप लोकेशन चेंज कर लो, हो सकता है आपका नेटवर्क अच्छा हो जाए. Okay, sir. ओके जी. वो लोकेशन पे तो नेटवर्क नहीं चाहिए. मयंक, आपने कब भेजा था पोर्टफोलियो रिज्यूमे अपना? सर ये आपका मैंने पर्सनल नंबर भेजा है अभी। अच्छा. फर्स्ट नंबर पे हाँ, ये ओके. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मयंक. Yes, sir. Good morning, sir. My name is गुड Mayank मॉर्निंग. Singh Mir, and I am from Kanpur, Uttar Pradesh. And I have completed my diploma in civil engineering from Government Polytechnic Kanpur. And now I am pursuing my BIM internship from Unique Civil, Pune, where I learning about BIM and learning about many softwares like AutoCAD, AutoCAD 2D, 3D, Naviswork, BIM 360, and Revit, and many more softwares which are used in civil engineering fields. ओके. व्हाट इज बीईपी? यू मेंशन हियर बीईपी, यू नो. व्हाट इज Yes, sir. बीईपी? Sir, BEP is basically used for the building education execution plan. It is basically a document in which it is mentioned that how the project will be executed in a document manner. ओके. एंड व्हाट इज बीआईएम? Sir, BIM is basically stand for the building information modeling. It ओके. is a yes, sir. BIM, sir, is a process in which is a process in which many stakeholders of the projects come into a single collaboration where they work on a same project in their different fields like architectural and stakeholders and as well as engineers, structure modelers, etc. ओके. एंड व्हाट इज कोवी? यू जस्ट मेंशन हियर कोवी, यू नो कोवी. Sir, व्हाट इज कोवी? COVID basically stand for construction info construction. Sir, I don't recall. ओके, नो इशू. You just mention your pass out year. When you pass Yes, out sir. your degree? Sir, 2024. 24. What is your project in the college? Sir, my project in a college is sustainable. Uh, Basically, it is uh, energy efficient model of a building. Okay. And why should we hire you? Sir, I am
I am basically a keen learner about BIM's BIM industry, and I am learning course about it. And I have a keen interest in learning the more skills about the BIM industry. So I want to be a part of company where can I boost my skills. Okay. And your resume just, is there any career gap? No, sir. In 24 I have passed out, and in 25 I have joined Unix Civil as an Oh, intern. you just mentioned here you just do something from CAD DAP. What is it? Yes, sir. I have done basics of Revit and AutoCAD. It's a 4 month, just like a course. Okay, but you just mentioned here that as an experience. Yes, sir. Why? Sir, basically I have taken some experience about the basics of Revit and If you done six yes. month minimum, then only you need to Okay. mention in the experience. Okay. Okay, so you Okay. just do this in the certification tab. Okay, Okay. and the project for diploma was green building model. Yes. What was the role in that? Means what you done in that? Sir, in basically it is a teamwork and which comprises of about 8 to 10 members, and in that my role was to draw the layouts and mm, and basically think about the material which is can be used in a green building model, and how can we provide the natural ventilations and lightening of the building so that we can make it energy sufficient. Okay, Okay. Yes. and yes, look at Revit, and you use their V-Ray also. So you just done your V-Ray render in the V-Ray, the green building model. No, just I said just beginning that. Okay. And How many companies you applied till now, Mike? sir, till now I have applied to about 3 to 4 companies. 3 to 4 companies. Yes. Okay. Today your task is same. You need to Yes. apply in the 5 companies. 4 you Okay. already applied. ठीक है. Okay. 9 companies का लिस्ट आप चाहे तो एक्सेल फॉर्म में या तो व्हाट्सएप फॉर्म में मुझे लिस्ट चाहिए कि ये मैंने 9 कंपनी में सर अप्लाई किया है. ठीक है. Okay. तो एक रिकॉर्ड भी हो जाएगा कि यार मुझे फॉलो भी लेना है 15 दिन बाद. ठीक है. और क्या बोलते हैं दूसरी चीज ये केवल हटा दीजिए. जो कोर्स सर्टिफिकेट है ना उसका अलग Okay. टैब डाल दो Okay. सर्टिफिकेशंस. ठीक है. और तो सब सही है. एक तुमने जो डिप्लोमा का प्रोजेक्ट और डिग्री के प्रोजेक्ट के बीच में काफी बड़ा स्पेस डाल दिया है. Yes. ठीक है. देखना उसको थोड़ा सा स्पेस ज्यादा है. ठीक है. Okay. इतना स्पेस की नीड नहीं है और तो सब सही दिख रहा है. और पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है आपके? ये सर पोर्टफोलियो मेरा सर काफी कुछ हो गया है। मैं शेयर आप कर दूंगा आपसे अभी। अब मुझे नेक्स्ट टाइम इस रिज्यूमे में ही ना पोर्टफोलियो का वो चाहिए, हाइपरलिंक चाहिए. सर और मैं शो लिंक कर सकता हूँ अभी। नहीं नहीं मतलब मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे. ओके सर। बट मतलब मुझे रिज्यूमे में आपके चाहिए क्योंकि आप रिज्यूमे तो भेज रहे हो सबको. ये बट सर। पोर्टफोलियो हाइपरलिंक नहीं है ना. ये सर मैं कर दूंगा एप्पल। ठीक है. तो लिंक्डइन आईडी और पोर्टफोलियो आईडी को यहाँ पर हाइपरलिंक करो. ओके। ठीक है. ये मैं केवल मैंग को नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए है. जहां पर भी अप्लाई कर रहे हो अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं बना है तो विदाउट पोर्टफोलियो है केवल लिंक्डइन को हाइपरलिंक करो. दोनों बना हुआ है तो दोनों ऐड करो तभी तो फायदा होगा ना. यस। ठीक है. तो जस्ट डू दैट नाउ. ठीक है. ओके। और ओके। क्या बोलते हैं इवनिंग में 10 PM पे रेबिट एमईपी दिमानी से पढ़ाएंगे, जरूर करें. ठीक है. ओके। ठीक है. ओके जी. हाँ जी रिंकू कुछ बोल रहे हो? जी सर, फिर मतलब वो जैसे जैसे पोर्टफोलियो बनता जाएगा फिर वो हर बार मतलब चेंज करना पड़ेगा वहां पे चेंज फिर। करना पड़ेगा. ठीक है. अभी के लिए काम कर सकते हो, कैनवा का लिंक दे दो. ओके सर। ठीक है. कैनवा के लिंक का फायदा क्या होता है? अपग्रेड करते जाओगे दिखता जाएगा. तो फिर उससे सर अगर मान लिया कि क्या पता कोई और हमारा वो लिंक से खोल के उसको चेंज कर दे फिर सर। क्या चेंज कर दे? नहीं तो तुम कंपनी को अप्लाई कर रहे हो ना, कोई इधर उधर थोड़ी किसी को दे रहे हो. ओके सर। ठीक है. कंपनी को अप्लाई कर रहे हो और उसमें चेंज क्या ही करेगा. मतलब कुछ भी डिलीट भी कर सकता है सर, फिर वो दोबारा बनाना पड़ेगा। एक बार चेक करना डिलीट होता है क्या मुझे पता नहीं है, अगर है तो और मत करना फिर. सही बात है. ओके सर। मेरे हिसाब से केवल व्यू करने के लिए दिया जा सकता है. बट अगेन क्योंकि मैंने नहीं किया हुआ है तो मैं नहीं बोल सकता हूँ. चेक करो एक बार. ठीक है. लगे तो एक बार मुझे लिंक भेज देना, मैं देखूंगा एडिट होता है क्या मेरे end पे. ठीक है सर। बेसिकली एडिट होने वाला नहीं देना है. यस सिर्फ सर। व्यू करने के लिए देना है. वो चेक जी कर सर। लेना, रहेगा कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग. ठीक है. ओके सर। और नहीं रहेगा तो क्या बोलते हैं
ड्राइव का फोल्डर का तो होता है कि, लेकिन फोल्डर से मजा नहीं आएगा। वैसे जहां तक, एक बार देखो, एक बार कैनवा का मुझे भेजो लिंक, मैं देखता हूँ कि एडिट होता है क्या मेरे एंड पे। ठीक है। ठीक ठीक अगर है सर। एडिट हो रहा है तो फिर मत देना। तब क्या बोलते हैं, वही अपना अपडेट वाला दे देना, और नहीं हो रहा है तो फिर वेल एंड गुड। यस सर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर मसूद, आप ट्राई करें आप। मसूद। सर हाँ जी। अगेन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन शॉर्ट, क्योंकि लास्ट टाइम हुआ था बट थोड़ा सा रह गया था, तो मैं आपको रिज्यूम देख लूँ। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi sir, good morning sir. गुड मॉर्निंग First जी। of all, thanking you for introduce myself. हाँ। My name is Sheikh Masood. I am basically from Nellore, Andhra Pradesh. I completed my graduation in RSR Engineering College in the stream of civil engineering. After completion of my graduation, I started my career as a highway engineering in BACPL infrastructure in Nashik. Currently, I am pursuing a BIM professional course from Gurukul Academy. In this course, I include AutoCAD 2D. So sorry to interrupt. I just want to know about your experience. Explain about the experience. In like my previous experience, sir. Yes, yes, date wise. I actually, sir, I my BTech is completed in 2019. After that, in October 2019, I got job. I placement in college selections in BACPL infrastructure. Coming to my project, it was a uh, express highway, sir. It was laid in between Nagpur and Mumbai. It was a six-line express highway, sir. In that at initial stage, I have worked for like embankment layers. After that, after embankment layer, we have made another layer that's called as subgrade. After that, a GSB layer. After that, DLC layer. After that, PQC. It was final layer, sir. At That's early it. You need stages, to, means I just want to know ki in how many companies do you work till now. So just explain about that. Or not not that's job one. description. Yes, sir. After Yes. that, due to some family problems at home, I quit the job. After that, I have been worked in single projects. In that, I have worked for STP projects, sir. When you join that organization. Due to sir, my elder father was expired, sir. Actually, he was a government job holder. So at that time, I think I am at home. Is mandatory at that time, sir. That's why I quit the job. Or when you quit that job, in which year October you quit the job? 2021, sir. October 2021. 21. Right? Okay. And again you join in when you join next company? Jan 2024, sir. Jan 2024. And when you left Yes. that company? September 2025, sir. इसी मैंने क्वेश्चन पूछा, आप गलत कर रहे हो, डाटा जो लिखा हुआ है वो नहीं बोल रहे हो आप। ओके। you just said you just joined the job in the November 2019. ठीक है, but you joined, oh sorry, you just Yes, sir. said कि you just joined the company in the October 2019. Okay, but this is November 2019 you mentioned here. You said कि you left the organizations in October Yes, sir. 2021, is it? But you just mentioned here October 22, sir. 2022. 22, sir. Got it? That Yes, means sir. there is something mistaken there, right? So that's why I just want to know about that key. What is it? Okay, so you joined the internship in the BIM. Uh, uh, just tell us about that year gap. Means October 22 to 20 January 24. It's 2 year approx. Okay, so Yes, sir. what was the reason? One reason you just said that is okay. Another reason? In that time, sir, my mother, my father is a government job holder, sir. Okay. Uh, mm, at that time, sir, that job is, I will I will take care of about that all our this PF and this one, sir. And in the time, I have also try for some IT job, sir. When And when second COVID came, in which year?
23 सर, हाँ 2023 का 2 सर। 22। ठीक है। सो इसको कोविड के तरफ लेके चले जाओ। ठीक है। ओके सर। इसको ऐसे लेके जाओ कि 22 I just left the organization. After that, due to the COVID in my family, there was very much disturbance. ठीक है। और ऑलरेडी आपके यहाँ पर डेथ वगैरह तो हुई ही थी, है ना। तो ड्यू टू कोविड देयर आर सब सिचुएशन वाज नॉट दैट मच ओके। तो आई नीड टू स्टे देयर एंड financially we are like at that time in very bad situations. And after that, where I again joined my organizations in Jan 2024. ठीक है। Between that, I just work for the offline works just for earning the extra money. And या फिर बोल सकते हो कि for 1 or 2 months I just work for the some projects. I just get the some amounts. That's why I'm not mentioned here. And from Jan 24, right now I'm working for the same. ओके ठीक सर। है। कुछ कोविड का दिखाओ यहाँ पे, क्योंकि 22 आपका पास आउट, तो इसमें ना जो हम यहाँ लिखो इसको मैच होना चाहिए। ठीक है। मैच नहीं हो रहा है मतलब हमको लगेगा तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है। ओके। ओके सर। एंड नाउ just to mention here the parametric Revit family. So what do you know about parametric Revit family? What is it? सर पैरामीट्रिक Revit families means if we want any like blocks, we can measure through that parametric, sir. Okay. How to create parametric families? Like parametric families, like we have to, that means I want to tell about process, sir. Yes, yes. I didn't get, sir. Okay. You don't know about process parametric families? No, sir. Types of Actually, types of roof. Types of roof we can create in the Revit. What are the I worked on it, sir. But types of roof? there are two types of roofs, sir. Hello. Huh. Okay. What is Hello, BEP? What is BEP? नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा। What is BEP? हेलो मसूद, आवाज आ रही है? सर। मेरी आवाज आ रही है सर, मैं बात ही कर रहा हूँ हाँ, सर, नहीं लेकिन आवाज आपको नहीं आ रही है। मेरा वॉइस नहीं आ रहा है। ओके। नहीं आ रहा है। इसमें कुछ चेंजिंग है, कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क थोड़ा हाँ प्रॉब्लम हाँ। है। आपका जो 12th लिखा है आपने वो बड़ा लिखा हुआ है। 10th आपका छोटा लिखा हुआ है। ठीक है। तो एक यहाँ पर मिस्टेक है। दूसरा मिस्टेक आपका मुझे याद दिखा था। आपने एक तो पीडीएफ नहीं भेजा ना दोस्त, पीडीएफ से ज्यादा अच्छे से क्लियर होता है। एक कहीं पर हेडिंग नहीं डाला था आपने। ठीक है। तो अभी ना मुझे पीडीएफ में भी भेजना। और इसमें सब इधर उधर हो गया तो आज ज्यादा समझ नहीं आ रहा है। 10th और 12th जो लिखा हुआ है सेम लेटर में होना चाहिए। ठीक है। 10th बहुत छोटा लिखा हुआ है, 12th ओके बहुत सर। बड़ा सा लिखा हुआ है। और एक तो मुझे कुछ डेजिग्नेशन का प्रोजेक्ट का कहीं तो मिस्टेक था, वहां पर हेडिंग जो है आपका वो बोल्ड नहीं था। प्रोजेक्ट तो है, अथॉरिटी है ये। ठीक है। ठीक है। कहीं तो मैंने पढ़ा था। ठीक है। बाकी एक बार चेंज करके मुझे पीडीएफ दिखाओगे तो अच्छे से हम ओके उसको सर। एडिट कर पाएंगे। ठीक है। ठीक है, मतलब करो आप, ओके क्योंकि सर। अब नेटवर्क इशू है, आपको मजा नहीं आ रहा अभी। ठीक है, कोशिश करना कि इसको ठीक करके। और पोर्टफोलियो का क्या स्टेटस है आपके? स्टार्ट ही नहीं किया, दोस्त ने भरोसा दे दिया। एक्चुअली पहला ये पहला 2-3 पेजेस का कर दिया था सर, ये 14वीं प्रोजेक्ट मेरा डिलीट हो गया सर, उसके लिए उसको फिर बना रहा हूँ, लाइक एलिवेशन ये सब भी। हेलो सर।
चला गया है क्या? हेलो, एनीवन हियर? सर, हेलो। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। हेलो, आवाज आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी गाइस, चली यस गई है, सर, आ रही है गई सर, अब थी आ रही नहीं। है सर। ठीक है, तो अभी मैं, आ रहा है जब सर। तक लाइट है, ठीक है, मैं कैमरा ऑफ करना पड़ेगा गाइस मुझे, क्योंकि थोड़ा बैटरी इसका चलेगा, मेरे लैपटॉप को बैटरी का प्रॉब्लम आ गया है। ओके, तो थोड़ा सा लोग फास्ट करेंगे। अयान अपना माइक ऑन कर लीजिए फटाफट, जिसका रह जाएगा हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं सबका हो जाए जिस यस जिन्होंने सर। रिज्यूम भेजा हुआ है। वही ठीक है है, सर। ओके जी। ठीक है, एंड मसूद हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर समय रहा तो, क्योंकि मौका नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक है, तो इसको पहले कंटिन्यू करते हैं, टाइम जैसा रहा उसे करेंगे। मिस्टर अयान, just to mention you here as Vire. You know what Vire and Inkscape both, right? In your resume, you mention यस here. सर। So, what is the difference between Vire and Inkscape? Sir, basically both are the rendering softwares which Hmm. we can work easily, but Hmm. Vire is most useful in SketchUp and NSTEP is most useful in Revit. Okay, and you just mention here scan to BIM and CAD to BIM. What do you mean by CAD to BIM? Sir, CAD to BIM is basically the AutoCAD files which we can import it in Revit and we can work on a Hmm. 3D model on it. Okay, you just mentioned dimensions of BIM. What do you mean by dimensions of BIM? What are the different dimensions in the BIM? Sir, there are five types of dimensions in BIM is 3D, 4D, 5D, 6D and 7D. And the first Hmm. of all in a 3D dimension, we work on a model, and in a 4D dimension, we work on a time. That saves times in constructions, times and cost of construction project. Third Hmm. one is third one is the concepts. Uh, Okay. Third one is concept, which is a 5D direction in BIM. Hmm. And fourth one is fabrication and assembly. Hmm. That is 6D, and 7D is as built means complete information of the project. Hmm. I think not prepared about that. And what are the different LODs? So there are six types of Different LODs. LODs. Okay, continue. There are six types of LODs in VIM. Explain about, LOD, explain all the LOD. sir, LOD 100, LOD 100, which is work on a systematic design. LOD 200, uh, Okay. LOD 200, LOD 300 is used for Hmm. detail design. LOD 350 is Hmm. used for construction documents. LOD Hmm. In LOD Revit, there is LOD a split and split. You know that? Explain, explain, explain. Sir, your voice is stuck. I don't get it right properly. I don't hear it properly. Oh, okay, I think again, I think network issues आ गया है, कोई बात नहीं. Is there is a split and a split with gap in Revit? You know about that? Split and split in Uh, gap. Sir, split command is basically we can cut one portion to the one portion with other portion, Hmm. and split with gap means we need to provide a proper distance between them. How much gap we can provide in that? Minimum and maximum? Sir, don't know minimum and maximum. You need to know. That means you not read that PDF, na? For the written exam, I will share you na 13-page PDF, Yes, sir. 1.6 mm to 304.8, 304 mm. ठीक है. Okay. Different in Revit. What is the use of view range command? You use about the view range? Yes, sir.
View range. What is the use of view range command in Revit? No, sir. Don't know. You not read about that. Okay. And difference between reference line and reference plane. A reference plane, we can work on means if our object in a levels, then we need to Hmm. stretch a reference line. We Hmm. can set it. It's like a distance between two. If we work on a foundation, then it's like a distance between two foundation. If we work on a column, then it's the distance between the two column. That is Okay. known as a reference line. Okay. And what are the different Revit? What are the different parameters in the Revit? There are two types of parameters. Means first of is parametric and second one is non-parametric. Think you not read that PDF, Ayan. ठीक है आपने पढ़ा नहीं ना 13 पे वाली PDF. No, sir, no, not. In how many companies you applied till now? There are four companies I applied. In 4 companies till now you applied. Yes, sir. Okay, and any you got any reply in that? Not so, sir. Not yet. Okay. So first of all, try to apply in the 5 companies minimum. Ayan, ठीक है आज का आपका टारगेट रहेगा कि आप 5 companies अप्लाई करोगे. How much you complete your portfolio in percentage? Sir, sir, as according to our project, I complete at least 50%. 50% you complete in that. Okay. Just try to mention the link of that. ठीक है जितना हुआ है ना Yes, sir. उसका लिंक भेजो अपने उसके अंदर. ठीक है फटाफट. Okay, sir. आपको बाकी सब तो सही है. आपका लिंक्डइन लिंक्डइन का हाइपरलिंक आपने किया ही है. केवल पोर्टफोलियो का हाइपरलिंक कर लीजिए. ओवरऑल योर लाइक रिज्यूमे इज ओके. ठीक है अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है. Okay, sir. और दोस्त पढ़ो. तुमने पढ़ा नहीं है आज अयान. वो जो तुमने डायमेंशंस Yes, बताया ना वो भी गलत बताया है सारा. yes, sir. ठीक है. तुमने 6D में बिल्टअप एरिया के बारे में वो क्या बोलते हैं एज बिल्ट डिस्कस किया. तो एक बार उसको रिवीजन करो. तुमने स्टडी नहीं किया हुआ है और अप्लाई करो क्योंकि अभी ज्यादा देर हम रिपीट नहीं कर पाएंगे. लैपटॉप में बैटरी कम है. ठीक है. ठीक Yes, है sir. चलो. नाउ नेक्स्ट इज मिस्टर जीवन. जीवन आपने रिज्यूम भेजा हुआ है तो माइक ऑन कर लीजिए. जीवन के बाद है उदय. जीवन यू नीड टू चेंज फर्स्ट योर रिज्यूमे. दिस रिज्यूमे इज नॉट वैलिड. ओके. बहुत ज्यादा मतलब ये रिज्यूमे ही गलत है पूरा. ठीक है आप देखिए ऊपर आपके सहयोगी हैं रिंकू है उन्होंने भेजा हुआ है उनका रिज्यूमे देख लीजिए. और अयान का रिज्यूमे देख लीजिए. आपका रिज्यूमे पूरा चेंज करना पड़ेगा. नाउ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ जीवन. जीवन इंट्रोड्यूस Good योरसेल्फ. morning, sir. Uh, Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. My name is Jivan Muik. I am from Satara, Maharashtra. I have completed my diploma in civil engineering from Government Polytechnic Kolhapur, securing distinction. Currently, I am doing BIM professional course from Unique Civil. In that course, I learn about different softwares such as AutoCAD, Revit, Architecture, Revit Structure, Revit MEP, Enscape, Navisworks, Tekla, etc. Sir, ओके. व्हाट इज बीआईएम जीवन? BIM stands for Building Information Modeling. हम्म. BIM is the process in which we make intelligent 3D model with the हम्म. help of which we can extract information for further use. ओके. व्हाई विल नॉट ज्वाइन योर लास्ट मॉक? Last month, due to some personal reasons and functions in my family, that's why I'm not joining. व्हाट्स योर डेली रूटीन? व्हाट्स योर डेली रूटीन जीवन? Sir, after wake up
I do my own work. After that, I finish my lunch. After that, I attending lecture and doing homework that is given. After Going for 19, after 19, what are the things you done? After 19 आपने क्या किया? after 19, sir, due to Corona, I have not worked for 2 years, 2020 and 21. After that, in 22, I have joined one company. For 6 months, I have worked there. After that, I have preparing for government exam. ओके, जीवन आप काम नहीं कर रहे दोस्त, ऐसा लग रहा है आपको? आपका रिज्यूमे में भी मेंशन नहीं है, लिंक्डइन आईडी भी आपने मेंशन नहीं किया हुआ है, पोर्टफोलियो का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? सर, लिंक्डइन का आईडी मेरा बना है लेकिन उसका लिंक नहीं दिया है, और क्यों पोर्टफोलियो नहीं का दिया आपने? करेक्ट। कितने कंपनी में आपने अप्लाई किया टिल नाउ? सर 2 कंपनी में किया था। और आप जॉब नहीं कर रहे हो ना कहीं पे? नहीं कर। ठीक है, फिर पूरा दिन कर क्या रहे हो? यही सर, पीछे का बहुत काम बाकी है ना, तो क्या बाकी बताओ तो, क्या टाइम, किया? जो किया आप क्या आपने? डेली का होमवर्क दे रहे हो उसमें से बहुत काम बच रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, पर हेलो जीवन सर। है तुम्हारा काम दिख नहीं रहा है उसने। हेलो, तुम्हारा काम दिख नहीं रहा है मुझे। तुम लैपटॉप से लॉगिन हो कि मोबाइल से लॉगिन हो अभी? मोबाइल से। मोबाइल से लॉगिन हो ना? और कितनी कंपनी में अप्लाई किया है तुमने? 2 कंपनियों में। 2 कंपनी। और कम्युनिकेशन के लिए क्या कर रहे हो? यही सर, अपना मॉक चलता है यूनिक सिविल में हो। और यूनिक की बैच जो ज्वाइन किया, क्या कम्युनिकेशन की? नहीं किया सर। क्यों? क्योंकि आपका कम्युनिकेशन बहुत वर्स्ट कंडीशन पे है, आपको पता है इस चीज के बारे में? कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम पहला है जीवन। दूसरा प्रॉब्लम है आपका रिज्यूमे सही नहीं है, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम है अभी आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर रहे हो। जिस जिस एनर्जी के साथ आंसर चाहिए होता है वो एनर्जी कहीं से भी नहीं लग रही है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। मुझे आपका काम देखना है, टिल नाउ आपने कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, कैसे खाओगे अभी? दिखा सकते हो मुझे कितने प्रोजेक्ट में है? सर, मैंने फोटो भेजा कुछ था ना ग्रुप में। वही फोटो मुझे कि टोटल कितने किए हैं तुमने अभी तक में, कि मुझे काम यहाँ 5-6 दिख नहीं रहा है। प्रोजेक्ट किए होंगे। रेविट आर्किटेक्चर के 5-6 प्रोजेक्ट हुए हैं। स्ट्रक्चर के आपने अभी जितने दिए हाँ, उतने हुए, कल का बाकी है। मुझे सारे प्रोजेक्ट का कैसे दिखा सकते हो? पोर्टफोलियो कब तक तुम दिखा दोगे मुझे? सर, पोर्टफोलियो का तो अभी 3-4 पेज से क्या है, बाकी सब बाकी। क्यों नहीं कर रहे दोस्त? रीजन क्या है, इतना ही क्यों किया? नहीं बनना है ना, आलस कर रहे हो ना? कितने घंटे डेली बैठ रहे हो टाइम। आप? टाइम नहीं मिल रहा है, वाह। जब जॉब नहीं कर रहे हो तो टाइम कैसे नहीं मिल रहा है? ये सर, वर्ड। मतलब बहुत टाइम, अगर कुछ चीज़ करने जाओ तो टाइम बहुत जा रहा है, इसलिए हो नहीं पा रहा है उतना टाइम। मतलब ये 24 घंटे कम पड़ रहे हैं ऐसा? क्योंकि दोस्त देखो, कंपटीशन बहुत है, ठीक है। और आपका 19 का पास आउट ईयर है जीवन, इस चीज को प्रैक्टिकली समझो, हम्म। ठीक है। 19 के पास आउट विद डिप्लोमा होल्डर, ठीक है। अगर नॉलेज एक्सीलेंट नहीं रहा तो एंटरटेन नहीं करेगी कंपनी।
ठीक है सर। समझ गए? तो कम से कम 10 घंटा बैठो, ठीक है। और मुझे कल पोर्टफोलियो में सिर्फ और सिर्फ सारे प्रोजेक्ट की फोटोज चाहिए, ठीक है। सारे प्रोजेक्ट की फोटो मतलब, अभी तक तुम पोर्टफोलियो की डिटेल मत करो अभी, ठीक है। जस्ट मुझे पोर्टफोलियो में ये दिखाओ कि पेज, ये प्रोजेक्ट नंबर 1 कैलेंडर ये है, प्रोजेक्ट नंबर 2 कैलेंडर ये, 3 कैलेंडर ये, 4 कैलेंडर ये है। मुझे सारे प्रोजेक्ट का रेंडर दिखाओ जितना तुम कल तक कंप्लीट कर सकते हो, पोर्टफोलियो में दिखाना है, याद रखना, ठीक है। ठीक है। और जीवन कम से कम 10 घंटा बैठो दोस्त, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन भी सही नहीं आ रहा है। आपने लास्ट मॉक भी मिस किया था, ठीक है। आपको याद है लास्ट से लास्ट वाला वो मॉक मिस किया था, ठीक है। अब देखो हाँ क्या सर। होता है, डेली मेरे पास जीवन इतना समय नहीं रहता है ना दोस्त, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, क्योंकि कैरियर तो आपका चौपट होगा ना, ठीक है। तो इसलिए मॉक को जरूर अटेंड करो, उससे पता चलता है कि हम, तुम्हारा रिज्यूम देख के मुझे समझ आ रहा है कि तुम पवेलियन से बाहर जा रहे हो, ठीक है। अब तुम्हारा होप्स हो कि तुम्हारा पोर्टफोलियो अच्छा हो, मुझे ठीक है सर। दिखाओ पूरा का पूरा, जितने कल के क्लास में रहना है, ठीक है। और मुझे इवनिंग में आपको रेमिट एमवीपी का लेक्चर है इवनिंग में 10 बजे, अभी बैठ जाओ, रात को 10 बजे तक बैठे रहो, ठीक है। बहुत करना, बीच में खाने के लिए उठ जाना, उसके बाद बैठे रहो, पढ़ो कंटिन्यू, क्योंकि दोस्त जरूरत है, कम्युनिकेशन का भी दिक्कत जा रहा है और कॉन्फिडेंस का भी दिक्कत जा रहा है, ठीक है। और मॉक मत मिस करो, तुम्हारा ही नुकसान है इसमें। चलो, ठीक है। ठीक है जीवन। एंड नाउ, नाउ नेक्स्ट इज, किसका रिज्यूम आया हुआ है? इनका आया, उदय का आया होगा। उदय, ऑन माइक प्लीज। Yes, sir. Yes, sir. Hello. जी, आपने, हाँ जी उदय, आपने लिंक्डइन आईडी, यू नॉट मेंशन योर लिंक्डइन आईडी हियर, Yes, sir. वो लिंक्डइन हाइपरलिंक का आईडी। इशू आ रहा है सर। हाइपरलिंक लिंक का इशू आ रहा है सर वो। मुझे इसका वर्ड फाइल अपने रिज्यूम का दे दो, वर्ड फाइल, ओके। एंड हाँ। क्या बोलते हैं, अपना लिंक्डइन आईडी का भी लिंक दे दो, ठीक है। दोनों मुझे दे देना, ठीक है कल सर। की क्लास में करके दिखा देंगे, ओके। ठीक है ओके, सर। एंड नाउ इज मेंशन योर रिज्यूमे अबाउट द, ओके ओके ओके। देखो गाइस, सब लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है, दैट इज नॉट गुड थिंग। सब कुछ कॉपी नहीं कर सकते हो गाइस, यू नीड टू चेंज समथिंग, ओके। यू जस्ट मेंशन हियर about the dimensions of the BIM, explain all the dimensions of the BIM है। Yes, sir. Basically, there are five dimension in BIM, sir. 2D, 3D, 4D, 5D, and 6D. Sir, ओके yes, sir. In 2D, we basically make a layout plan, means 2D plan of our project. ओके Only where we can plan level execution we can means mention there, like bedroom, kitchen, hall. In the basic detail we have mentioned. In 3D, sir, we make a structural visual representation of that means our project, where we mention elevation, color, elements, and doors, windows, like that. And in sir 4D, sir 4D we can sir I mean in 4D we can make more detailing, like sir cost and duration of that project, means time duration. And in sir 5D and 6D. what are the different LODs in BIM? Yes, sir. LODs, there are LOD 100, LOD 200, LOD 250, LOD 300, and LOD 400, sir. It's a different Explain, level of explain. development in VM. Yes, sir. Sir, in LOD 100 means, sir, it is a means we can only share basic information of that structure in LOD 100. In LOD 200, sir, we can make a model representation of that structure. Hmm. And in LOD 200, no, sir, LOD 100 model representation of structure we make. LOD 200, we can make a construction detail. Construction detail we made in LOD 200. And in LOD 300, uh, construction and execution detail we have means mentioned in LOD 300, sir. And LOD 400?
And 350? LOD 400, sir, means full implementation of a project is come under LOD 400. And 500? 500. You just pass out in 2020. Yes, sir. After that? Yes, sir. I have passed out 2020, but my 1 year is spent in Corona. So basically, from 2021, I have started my journey, outside journey after graduation. So from 21, I have prepared for competitive exam for 3 4 years. But in that, sir, I didn't get any fruitful results. So I decided to means change my career path and go into private industry. And in private industry also there is so many scope. So I think that okay, I will change my path to private industry. So I decide to means change my career, upskill myself, and for that I have joined a unique civil internship program where I have learn AutoCAD 2D, 3D, Revit 3D, Revit structure, Revit architecture, Navis work, and Tekla structure, Revit family like that. And also I have mentioned projects in Revit like residential building project, Chaudhary plant project, and structural project also we have working where we can means detailing the steel quantity to the structure You're like that. doing, okay, you're doing beam intensive, but you don't know about the LODs and dimensions of the beam. Sir, in detail, I don't know. Means I learn, but I not means memorize that theoretical. So that this is the But problem, how sir. you will work? If I'll provide you, you need to do the detailings up to 350. If you don't know what is 350, how you will do that work? Hmm. And okay, and how much you rate yourself out of 10 for the beam profile? Out of 10, sir, I will rate myself 7. Think not that much. And you not mention your portfolio. About the portfolio, you don't have a portfolio. Portfolio, sir, my portfolio is not completed yet, so I didn't mention. Okay, and you not mention your LinkedIn ID also due to hyperlink, right? LinkedIn, sir, hyperlink issue I tell you. I show you Mm. my LinkedIn, sir, that and Friday class I have showed to my LinkedIn also. Yes, yes, I Completed, remember but that. Okay. uh, Uday, what's your daily routine? daily routine, sir, my daily routine starts with 8 o'clock. I wake up at 8 o'clock. Then I Hmm. have make sir my own food because I am living hostel, so I have to make my own food. And after that, I attend 11 p.m. Lecture hour classes. I have attend. It is 2 hour class. After that, I take my lunch and have a sleep for half an hour. After that evening, sir, I revise all the things which is discussed in the class, and also half an hour I means learn theory part of that interview. And after then 5 6 p.m. I go for gym where I exercise 1.5 year 1.5 hour. After that I have means take my dinner, and after I search 9 to 10 I have search means companies where I have to apply, make a list, and in then I sleep, sir. And also means update my Naukri and LinkedIn. Yes, up At to what time you 11. sleep? Update the daily means at after up to 10 I have search means listing the companies where I have to apply next day, and after that I have update my LinkedIn and also apply LinkedIn jobs through LinkedIn and Naukri also. Half an hour I will give, sir. 40 to 1 hour I will give both Naukri and LinkedIn. And I got one call also, sir. Okay, Wait, I share you. Means in HR call also I got one. बट उदय जितना मुझे आपसे चाहिए आउटपुट उसके हाफ पर हैं आप. ये बहुत कंफर्टेबल लाइफ आप बता रहे हो. यू आर इन द ट्रेनिंग मोड. ठीक Yes, है, sir. आप 10 बजे सो रहे हो एज पर योर आंसर. 8 बजे सुबह उठ रहे हो. ठीक है, तो आपने मतलब टोटल 10 घंटा तो सिर्फ सोने में बर्बाद कर दिया ना. Yes, sir. 5 to 6 hours इज ओके. ठीक है, तो पहले तो इसको कम करो. दूसरी चीज, नहीं सर, अभी आप मेरा किसी. सर हाँ जी. माइग्रेन का भी इशू है सर, इसीलिए मैं ज्यादा
स्क्रीन टाइम नहीं ठीक है, देता हूँ सर, माइग्रेन इश्यू है सर मुझे। ठीक है। तो माइग्रेन इशू है ना, तो बीच बीच में क्या बोलते हैं, किताबें पढ़ सकते हो ना, ओके सर। थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना। लेकिन अगर तुम कहीं पर भी काम करोगे तो उनको तो तुम्हारे माइग्रेन से लेना देना नहीं है। ठीक है, वो तो बोलेंगे हम पैसा यस दे सर। रहे हैं, हमें करके दिखाओ काम। तो तुम्हें 9 घंटा तो वैसे ही बैठना है, और तुम यहाँ पर 8 घंटे भी नहीं दिखा रहे हो अपना बैठने का। ठीक है, और इस 8 घंटे में तो छूट है कि आप चाहो तो लैपटॉप चलाओ, चाहो तो पढ़ो। ठीक है। तो कुल मिला के क्या बोलते हैं, मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं, अप टू द मार्क नहीं है होते। थोड़ा और मेहनत करो दोस्त। ठीक है, नुकसान पे जाओगे। और पहले तो तुम्हें ये, दूसरी चीज, अभी रिटर्न एग्जाम होने वाला है, सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। बट यार थोड़ा सा मेहनत करो और। ठीक है। ओके। माइग्रेन है ना, तो वैसे मैं लैपटॉप थ्योरी वगैरह पढ़ रहा हूँ सर, पर वो मेमोराइज नहीं हो रहा है सर, मैंने 2 दिन लिखो, से 3। हाँ। लिखो, हम्म, लिखो। जब पेपर तुम्हारे सामने नहीं रहेगा, अब मुझे, मैंने तुमको बोला डायमेंशंस ऑफ द व्यायाम लिखो। जब तुम्हारे सामने वो किताब, वो कुछ है ही नहीं, अब तुम क्या लिखोगे अगर तुम्हें नहीं आता तो। ठीक है। यस सर। तुमने क्या किया, एक बार देखा कि अच्छा क्या क्या है, ठीक है, ओके। लिखा, फिर दोबारा एक हटा हफ्ते से दिया। पढ़ रहा हूँ सर मैं, वो पूरी पीडीएफ लगे तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, 10-12 हाँ, दिन हो गए नहीं सर, नहीं, कंटिन्यू पढ़ता हूँ मैं सर, इसका वो मतलब क्या हो रहा मेमोराइज है ही कि नहीं हम, होता सर। मेमोराइज हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ। थोड़ा सा मेडिटेशन करो, तुम्हारे इसके लिए भी, मेमोरी के लिए भी अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या बोलते हैं, जो अभी माइग्रेन का प्रॉब्लम है, इसको भी सोल्यूशन देगा वो। प्राणायाम करो थोड़ी देर। ठीक है। क्योंकि अगर एक हफ्ते से पढ़ रहे हो, तो अगर तुमने, सोचो ना कि अगर तुमको व्हाट इज बीआईएम ही लिखना है, ठीक है, एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, कितने बार में नहीं याद हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और ये क्वेश्चन ऐसे है कि फिक्स से कि पूछा जाएगा। ठीक है। ओके। तो करो उसको, क्योंकि ये आपको दिमाग नहीं मुझे दिख रहा है। ठीक है। और क्या बोलते, देखो जो कंपनी को चाहिए वो नहीं हो रहे। 8 घंटे तो तुम्हें, समझो कि अगर नहीं बैठ रहे हो तो खुद को धोखा दे रहे हो। इट्स नॉट अबाउट द उदय, इट्स फॉर द बैंक ऑल्सो, इट्स फॉर द रिंकू ऑल्सो, फॉर द मसूद, अविनाश, अयान एंड जीवन, सबके लिए है कि 8 घंटे हम नहीं बैठ रहे हैं, तो वहां 9 घंटे कैसे बैठेंगे। समझ रहे हो कंटिन्यू ना। पॉसिबल नहीं है सर, तो भी मेरा सर 6-7 आवर देता हूँ ना सर मैं, तो अभी मेरे पूरे दिन नहीं, का। इतना सफिशियंट नहीं है दोस्त। 9 घंटे तो होना ही होना चाहिए, 9 नहीं हुआ तो 8 होना चाहिए। और वो जो 8 होना चाहिए, उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब ऐड नहीं होना चाहिए। ठीक है। यस। थोड़ा सा बढ़ाओ, जिससे कि क्या बोलते हैं, वो हो जाए। अभी तो खुद क्या होता है ना, अगर तुम 8 घंटे बैठना स्टार्ट कर दो, मेरे हिसाब से तुम बीच में 5 मिनट ब्रेक ले लो। 1 घंटे बैठा, 5 मिनट का ब्रेक लिया। 1 घंटे स्क्रीन टाइम दिया, 1 घंटे थ्योरी को दे दिया। 1 घंटे स्क्रीन टाइम दिया, 1 घंटे थ्योरी को दे दिया। ये माइंड में रखो कि यार मुझे 8 घंटे का ऑफिस आवर्स कंप्लीट करना है। ठीक है। मोबाइल में वो स्टार्ट क्या आता है, स्टॉप वॉच आता है ना। और सर और एक इशू है सर, वो रूम में कैसा कंटिन्यू बैठे सर, कैसा डिप्रेशन जैसा लगता है सर, एकदम बैठ के एकदम कंटिन्यू बैठे तो अकेले में, वो एक इशू है, इसलिए वो मैं ब्रेक लेते लेके करता हूँ उसको। ठीक है। देखो ये क्या होता है कि अगर हमारे पास ना कंटिन्यू टास्क नहीं रहेगा उदय, ठीक है, हम्म। तो ये सिचुएशन बनती है। हम्म। ठीक है। कंटिन्यू टास्क नहीं रहेगा, तो अभी मुझे खुद प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग का। ठीक है, इतने काम ओके। रहते हैं, इतनी चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें होती है। बट मैं कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन रात को करता हूँ। अभी सुबह मैंने योगा किया, मेडिटेशन किया। ये पर्सनल बातें मैं शेयर नहीं करता हूँ, तुम बोल रहे हो तो मैं बता रहा हूँ। 1 घंटे मैंने प्रॉपर योगा किया, मेडिटेशन किया लगभग 10 से 15 मिनट। शाम को आऊंगा ऑफिस से, फिर से करूंगा। उसके बाद में वर्क पे बैठूंगा। तो ये मेरा पर्सनल हुआ है कि मुझे इससे फायदा होता है। ठीक है। अगर तुम बोलो जैसे डिप्रेशन, इसी से फिलहाल मेरे पास तो डिप्रेशन का समय ही नहीं रहता। ठीक है, तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी आऊंगा, नहीं होना जा रहा हूँ सर, क्लास में, हमारा आऊंगा बिजी तो शेड्यूल नहीं है ना सर, अभी अभी आपका बिजी कर दो ना बिजी बीजी, शेड्यूल। हाँ कर दो ना बीजी। सर, तो ठीक है, इसीलिए। बीजी कर दो उसको। इंग्लिश की क्लास, यूनिंग में क्लास लगा लो। अब क्या हो गया, 1 घंटा उधर बिजी हो गया। आज रात को 10 बजे बैच रख दिया, 1 घंटा उधर बिजी हो गया। 2 घंटे इधर क्लास में बिजी हो गया ना बैक। जब, और उसके बाद सीधे सीधे अभी तुम जिम जा ही रहे हो ना। ठीक है, यस जिम सर। जाना शुरू कर दो, 1 घंटा उधर, 2 घंटा वीडियो। मतलब कुल मिला के तुम्हारे पास जब प्लान रहेगा, तो तुम भ्रमित नहीं होगे। ठीक है। डिमोटिवेशन होता यही है ना, कि मतलब कि हम क्यों गड़बड़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लान ही नहीं रहता है, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद। ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्लान करो। और सबसे बड़ी बात है, गाड़ी को चार्ज रखो। कैसे चार्ज करोगे, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लो। ठीक है, जो मैं करता हूँ, तुमको जो अच्छा लगे, तुमको लगता है कि मैं गेम खेल के खुश हूँ, गेम खेल लो। ठीक है। तो कुछ ऐसा कर लो जिससे कि तुम चार्ज रहो। ठीक है। ओके खरो उदय, क्योंकि अभी ना वो प्लेसमेंट वाली फील नहीं आ रही है। ठीक है, बुरा मत मानना, डिमोटिवेट मत होना। जो हकीकत है मैंने बता दिया। ठीक है। ओके सर।
ठीक है जी। चलो, एंड नाउ नेक्स्ट इज उदय। आप अपना नाम इधर रखो, अपने अपने चंद्रपुर के नीचे ही नाम लिख दिया है, उदय दास उधर होना चाहिए। चलो, और इनको ओके जल्दी से सर। पूछ लो, क्योंकि दोस्त लेट हो रहा है मुझे लेट हो गया आज, लाइट नहीं थी ना, गड़बड़ हो गया 5-10 मिनट। जल्दी से पूछ लो क्या पूछना है, स्क्रीन शेयर करके। रिंकू, जी आपका कुछ सर, जी डाउट है, सर। पूछो। यस सर। दिख रही है सर स्क्रीन? हाँ जी, दिख रहा है। सर मैंने शेयर कर दिया अपना वो पोर्टफोलियो का लिंक। देख लेता हूँ मैं। हाँ हाँ, देखा मैंने। ठीक सर है। देखना सर, हाँ हाँ, देख लो। जैसे सर ये अब इसका मैंने पूरा एरिया वो कर रखा है सर, डिस्क्राइब बालकनी बाथरूम वगैरह सर। ठीक है। और मैंने इसको सर सेव भी कर दिया है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से लेवल 2 को ही खोल रहा हूँ तो ये उठ जा रहा है सर सारा कुछ ही। तो तुमने ग्राउंड फ्लोर को किया था ना, लेवल 1 को किया था ना वो। लेवल 2 को ही है सर, ये देखो सर ऊपर लेवल 2 पे है सर ये। हाँ हाँ और अब हाँ। मैंने दोबारा ही लेवल 2 को खोला है तो अब ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं रहा पर, सर। यहाँ पर जाओ, प्रोजेक्ट ब्राउजर में नीचे जाओ, प्रोजेक्ट ब्राउजर में नीचे जाओ। ये नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले, हाँ, और नीचे जाओ। या देखो एरिया प्लान, एरिया प्लान पे क्लिक करो। हाँ, इस पे क्लिक कर दो, लेवल 2 पे। वो आ जाएगा। यहाँ पर ओके। जिस फ्लोर का बनाओगे सब फ्लोर का आ जाएगा। यहाँ एक्चुअली उसको सेपरेट कर देना रेविड, नहीं तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे उसके और बाकी टाइप के काम करते समय। यस सर। या कहाँ पर वो नीचे लगा के दे देता है। ये ऐसे ही चौधरी प्रोजेक्ट पे भी गया था सर, उस पे भी एक बार चेक कर लेता हाँ, हूँ। सब में रहेगा, रहेगा सब में। अगर वो सेव किया हुआ है तो आराम से रहेगा। सर उसमें भी सर ऐसे ही था, जैसे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर किया तो हाँ, सेकंड फ्लोर का दिखा रहा था, लेकिन दोबारा फर्स्ट फ्लोर खोला तो वो फिर उड़ गया सर सारा। नहीं दिखाएगा, दिखाएगा। एरिया में ठीक है सर, जाओगे दिखेगा। फिर मैं यहाँ देख लो जाके आराम चेक से, कोई करता बात। हाँ, चेक कर लो, 100% दिखेगा। एरिया में देखिए, शेड्यूलिंग किया तुमने। अब शेड्यूलिंग हटेगा नहीं। ठीक है, हूँ। लेकिन जी उसका सर। नीचे टैब बना देता है, शेड्यूलिंग टैब। ठीक है, तो वहां से देख सकते हो। ओके सर। ठीक है। देखो देखो देख लो तुम, चौधरी देख लो, तब तो मैं पैकिंग कर रहा हूँ। फिर मुझे अभी इसके बाद नहाना वहाना होता है, फिर निकलता हूँ। यस सर। हाँ, जाओ वहां पे नीचे, ये देखो। यस सर, हाँ जी अब दिख रहा है सर। ठीक है, सब हाँ। दिखेंगे, डोंट वरी। ठीक है। ओके सर, ठीक है चलो, सर। इवनिंग में 10 PM पे मिलेंगे, ठीक है, शायद मैं भी रहूँ तो आ जाना, ठीक है। ओके सर।